गाइस, सो फाइनली हमारी मॉर्निंग हो गई है, कैंपिंग वाली मॉर्निंग। बहुत ठंड थी रात को। सो गाइस, व्हेन यू कम प्लीज ब्रिंग योर ब्लैंकेट्स, और एज आई प्रॉमिस्ड यू, आई विल शो यू माय मॉर्निंग व्यू and it is going to be amazing. So please stay connected and I welcome you all to my YouTube channel. ये मेरा सेकंड डे है कैंपिंग का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रहा आज का दिन। चलो देन, स्टे कनेक्टेड। जैसे मेरी शाम मस्तानी थी, दिन भी उतना ही सुहाना है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखाऊंगी, तो लेट मी शो यू द व्यू। So here we are at Sahaila Lake. Actually, this is rest area and man-made lake which is surrounded by mountains on all four sides and looks like nature in the middle. Such an ideal place for barbecue and camping. And a big bundle of joy for all the horse riders in the city. You will find professional jockeys as well as beginners along with riding instructors. मॉर्निंग में वॉक होना बहुत ज़रूरी है, एंड माई वॉक इज़ गोइंग टू बी विद नेचर, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो नेचर लवर देन इट इज़ अमेजिंग। चलो देन वॉक करते हैं। See the beauty. It's very fresh and cold water. Love with this place, guys. Must visit. ये ऐसा पोर्टेबल गैस लेके आए, जहाँ पे हम आज सुबह सुबह चाय और ये मैगी नहीं इंडोमी बनाने वाले तो हमारी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है ये। कुछ सैंडविचेस भी बनाएंगे, तो चलो। और ये हमारी चाय बन रही है।
मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया है, फ्रेश भी हो गई हूँ मैं। नाउ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो हम लोग मैगी बना रहे हैं। पानी उबल गया है। तो हमारी गर्मा गर्म रेडी हो गई है मैगी, पहाड़ वाली मैगी। सिंपल मैगी नहीं है हमारी मैगी, कुछ खास है क्योंकि उसमें हमने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। चिली फ्लेक्स, चीज एंड ओरेगानो। ट्राई दिस गाइस। मॉर्निंग में मैगी, पहाड़, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। If you are with your favorite one, then definitely you should not miss opportunity to touch the lake, feel the beauty. So let's have fun with it. So when you are in nature, there must be surprise element, and this is the surprise element for us. We found 30 मीठे पेड़। अब देख सकते हो कितने मस्त है। टेस्ट करते हैं कैसे है। टेस्टी, ऑर्गेनिक। Place there is barbecue setup along with the campus, और उसमें बेंचेस भी रखे गए हैं। लेकिन इसका कितना ध्यान रखा गया है कि हर एक कैंपिंग एरिया पे, कैंपिंग स्पॉट पे ऐसे ट्रैश बिन्स रखे हैं। तो गाइज व्हेन यू कम, मेक श्योर यू कीप ऑल द गार्बेज इन दिस बैग ट्रैश बिन। While exploring the place and being wanderlust, we found off-road tracks and hills surrounding this place, and we captured amazing views and clicked some memories.
तो फाइनली ये हैपनिंग टूर इज अबाउट टू फिनिश, दिस हैपनिंग कैंपिंग अबाउट टू फिनिश। बहुत मज़ा किया मैंने एंड ऑल नेचर लवर्स प्लीज़ आप प्लान करो, अगर आपको पसंद है ऐसी नेचर जगह, ऐसे नेचर कैंपिंग, देन दिस इज़ द प्लेस टू विजिट। मुझे अभी इतना अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है क्योंकि जाने का टाइम है, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा, काम है। So it's time to leave and I'm going to explore nearby areas in this place. Stay in touch and please share me your experiences when you come for the camping, and if you have any suggestion for nature camping, then please do comment in the below comment box. Bye bye. So that's it for the video and this place. Hope I connect you through my videos. Please like and share this video so it reaches out to more people. Subscribe to my channel. I'll see you soon in next video. Till the time, take care. Bye bye. Dhanyavad.